Namaskar दोस्तों. In the fifth session of our power electronics, today we'll try to understand the front fascia of MCC VSD, internal power components. Many times हम ड्राइव के सामने खड़ा रहता है दैट पैनल के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स इंस्टॉल्ड हुए हैं, each and every component installed at particular location has their own importance. ऐसा नहीं है कि फ्यूज पहले एमसीसीबी बाद में मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर. नो, एब्सोल्युटली नॉट. ईच एंड एवरी कंपोनेंट हैज हिज ओन इम्पोर्टेंट एट हिज ओन लोकेशन. सो मेरे सामने अगर वेरिएबल स्पीड ड्राइव का पैनल है तो व्हाट आर द कंपोनेंट सपोज टू बी इनसाइड अ वीएसडी पैनल. सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट component layout, especially VSD power single line diagram, component layout उसके बाद में, and what is the function of each component with some small 5 to 10 minutes I will try to explain all the things. तो आपके सामने मैं अभी VSD सिंगल लाइन पावर डायग्राम रखता हूँ. यहाँ पर हम कंट्रोल की बात नहीं करेंगे. नाउ आप देखेंगे द थ्री फेज फॉर एग्जांपल 415 वोल्ट. टॉप में the topmost is MCCB molded case circuit breaker triple, followed by a fast acting semiconductor fuse. And semiconductor fuse के नीचे there are three blue color के जो है that is nothing but a metal oxide varistor. And germanium is supposed to be used, so germanium GMOV, germanium metal oxide varistor, followed by chalk. Chalk is optional. If you are not using the chalk, the drive will work. So important of the chalk. In later part, we will try to explain the detail of the importance of the chalk, followed by a rectifier converts AC into DC. And rectifier के बाद में नीचे precharging circuit for a smooth precharging, for a smooth DC precharging of a capacitor, precharging circuit, and then immediately DC capacitor. DC बैंक के अंदर नीचे इन्वर्टर है which converts fixed DC voltage into variable voltage, variable frequency, and then followed by output choke. And last में the driven equipment is nothing but a motor. राइट साइड के ऊपर मैंने each and every component का एक छोटा सा explanation दिया है why it is being there. So टॉप से हम शुरू करते हैं. MCCB molded के circuit breaker protection against the thermal overload. That means if there is a prolonged overloading inside the VSD, the MCCB is supposed to be tripped. तो आप ड्राइव के सामने जब जाते हैं, जब MCCB ट्रिप मिलता है, so MCCB के अंदर एक सन ट्रिप तो रहता है, but if someone is not pressed that particular sun trip, then ड्राइव हमारा चालू कंडीशन, रनिंग कंडीशन, ये MCCB is found trip. That means there is something is prolonged overload टाइप के phenomenon हुई है. MCCB के नीचे you can see there is a fast acting semiconductor fuse for the protection of the VSD against the short circuit. If anything goes wrong inside the VSD, a short circuit inside the VSD, to isolate the 415 volt AC system from the faulty component, fast acting fuse will be blown off. So if the fuses are found blown off, अगर आप सिस्टम के सामने गए हैं और फ्यूज blown off मिलता है, that means there is a serious fault inside the VSD. We should not simply replace the fuse and start the drive. No. So it requires a detailed checking inside the VSD. Either there is a short circuit at rectifier side or a DC bus side, and it has blown the fuses. Fuse के बाद में आप देखेंगे there is a GMOV, germanium metal oxide varistor. उसका इम्पोर्टेंट, उसका फंक्शन मैं आपको दूसरी स्लाइड में बताऊंगा. बट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द dV by dt, हाई dV by dt ऑब्जर्व फ्रॉम द सोर्स साइड. बड़ा मोटर चालू होता है, बड़ा मोटर बंद होता है, कोई पीसीसी फीड के अंदर कोई एसटी बोर्ड के ऊपर चेंज, दे रिंग दैट ऑल द स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ टाइम एट अपस्ट्रीम. हाई dV by dt टू बी ऑब्जर्व बाय द ड्राइव. क्यों होता है मैं बताऊंगा. सो टू प्रोटेक्ट द ड्राइव, टू अवॉइड दिस हाई dV by dt एंटरिंग इनसाइड द ड्राइव, the GMOV will be short circuit and
blowing the fuses. So सिस्टम को आइसोलेट करने के लिए ऑटोमेटिकली। GMOV के बाद there is a input choke. Now input choke is supposed to be suppress the harmonics generated by the drive as well as the di by dt protection for the VSD. If sudden rate of rise of current will be observed, it will limit that particular current. So input choke हार्मोनिक फिल्टरिंग के साथ साथ डी आई बाई डी टी, अगर इनपुट चॉक नहीं है तो भी ड्राइव चल सकता है, बट इट कैन डिस्टर्ब योर हाई फ्रीक्वेंसी करंट से आपका अपस्ट्रीम डिस्टर्ब हो सकता है। एंड देन देयर इज अ रेक्टिफायर कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी, आइदर इट्स अ uncontrolled rectifier with a pre-charging circuit, either it's a semi control, either nowadays active front end control भी आया है। And followed by rectifier there is a pre-charging circuit to pre-charge the DC capacitor. Initially the capacitor will be charged through a pre-charging resistance, and once the 76-80% of the DC bus level is maintained, the resistance will be bypassed and contactor will pick up. After the pre-charging circuit there is one inverter which converts DC into variable voltage, variable frequency. And after this particular inverter there is an output choke. If the cable distance is higher than 300 meter, 250 meter, then in certain cases a manufacturer is supposed to provide the output choke to suppress the dV by dt to avoid the premature failure of motor because of the insulation failure. So output choke उसका फंक्शन भी मैं आपको डिटेल में बताऊँ। ईच एंड एवरी कंपोनेंट का अलग अलग स्लाइड से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। And ultimately it goes to the motor. So this is a single line power diagram of variable speed drive. अगर आपके सामने कोई भी VFD पैनल है तो 415 वोल्ट MCCB, फास्ट एक्टिंग फ्यूज, GMOV, इनपुट चॉक, रेक्टिफायर, प्रीचार्जिंग सर्किट, DC कैपेसिटर, इन्वर्टर, आउटपुट चॉक एंड फॉलोड बाय ए मोटर। राइट साइड के ऊपर हर एक चीज का मैंने आपको एक्सप्रेशन दिया है। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट साइड के ऊपर अगर आपको समझना है VSD सिंगल लाइन डायग्राम विथ पावर कंपोनेंट। वी विल मीट सून नेक्स्ट टाइम विथ ईच एंड एवरी कंपोनेंट का डिटेल के साथ अभी हम जर्नी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।